Assalamu alaikum everyone. How are you? I hope you all are fine. I'm your teacher Miss Falak Nas from Metropolitan Foundation School in class 1. So today what we are doing today? Today we are reading the rhymes which is included in your final term examination. You have to read and learn this rhyme for your final exams. And we do to learn conversation and their answers. So let's start it. First we going to start our English subject with our English subject. Now take out your page number 64. Got it? Lesson 15, tidying up. Lesson 15, tidying up. Let's read it. The girls are busy and so are the boys. They are putting away their books and their toys. The room is now tidy and quite a fine sight. Will it stay that way all day and all night? The answer is no. I just know I can tell. 'Cause I too once was a wee one as well. So now tell me, what is the meaning of tidying up? Tidying up means समेटना. अगर कुछ फैला हुआ है हम कहते हैं इट्स लुकिंग सो टाइडी. अनटाइडी, अनटाइडी मतलब बिखरा हुआ, गंदा. एंड टाइडी मीन्स नीट एंड क्लीन, समटा हुआ, साफ सुथरा. सो यू कैन इजीली सी इन योर बुक दैट पिक्चर. On page number 64 you can see the picture that the room is looking untidy and the children's put these things, books and toys, and put it in the shelf and basket. And then after few minutes you can see whole room is looking tidy now. Okay, now we should read it again. Tidying up. The girls are busy and so are the boys. They are putting away their books and their toys. The room is now tidy and quite a fine sight. Will it stay that way all day and all night? The answer is no. I just know I can tell. 'Cause I too once was a wee one as well. 'Cause means because. Because. This is a short form of because. And a wee means small. A wee means small. Again, the girls are busy and so are the boys. They are putting away their books and their toys. The room is now tidy and quite a fine sight. Will it stay that way all day and all night? The answer is no. I just know I can tell. 'Cause a two once was a wee one as well. What does it mean? The girls are busy and so are the boys. Girls भी busy हैं और कौन? Boys भी busy हैं. They are putting away their books and their toys. अभी लोग क्या कर रहे हैं? गर्ल्स और बॉयज़ जो टॉयज़ हैं और जो बुक्स हैं उनको अपनी अपनी जगह पे रख रहे हैं क्योंकि रूम जो है बहुत ज़्यादा अनटाइडी लग रहा है. द रूम इज़ नाउ टाइडी एंड क्वाइट अ फाइन साइट. अब थोड़ा रूम थोड़ा साफ सुथरा लग रहा है जो कि अच्छा लग रहा है. विल इट स्टे दैट वे ऑल डे एंड ऑल नाइट. क्या ये हमेशा ऐसे ही रहेगा पूरा दिन पूरी रात? द आंसर इज नो. नो. रूम जब हम साफ करते हैं तो फैल भी जाता है, फिर हम उसको अगेन साफ करना पड़ता है उसको, तो हमेशा तो ऐसे नहीं रहता. आई जस्ट नो आई कैन टेल. मैं बताती हूँ. 'Cause I too once was a wee one as well.
हम लोग ये बता रहे हैं कि मैं बताती हूँ कि हमेशा क्यों नहीं साफ रह सकता। हम लोग फैला भी देते हैं और फिर उसको समेट भी देते हैं। दिस इज आवर पोएम which is written by Alison Chester. Okay, you have to learn this poem. This poem is included in your examination, final term examination. Okay, so read it. Read this poem again and again and learn it. Now close your English book, English ORC, and this is your Urdu book. Come to your Urdu book, open page number 47. Lesson 15. Lal Pari. Lesson 15. Lal Pari. Now let's read it. जब भी आती लाल परी, खुशियाँ लाती लाल परी, रंग बिरंगे सपने देकर दिल बहलाती लाल परी, सुबह सवेरे प्यार से आकर, सुबह सवेरे प्यार से आकर मुझे उठाती लाल परी, लड्डू पेड़े बालूशाही खूब खिलाती लाल परी, जब भूलूं मैं अपना सबक याद कराती लाल परी, पंख पे अपने मुझे बिठाकर सैर कराती लाल परी। लाल परी, डू यू नो व्हाट इज लाल परी? फेरी, जिसके बहुत प्यारे प्यारे विंग्स होते हैं, पंख होते हैं जिनको हम पंख कहते हैं। इसके बाद बहुत प्यारी सी स्टिक होती है और बहुत प्यारी होती है, जो कि वो सिर्फ अच्छे बच्चे के पास आती है। सो रीड इट, लेट्स रीड इट विद मी। जब भी आती लाल परी, खुशियाँ लाती लाल परी, रंग बिरंग के सपने देकर दिल बहलाती लाल परी, सुबह सवेरे प्यार से आकर मुझे उठाती लाल परी, लड्डू पेड़े बालूशाही खूब खिलाती लाल परी, जब भूलूं मैं अपना सबक याद कराती लाल परी, पंख पे अपने मुझे बिठाकर सैर कराती लाल परी। पंख मीन्स जो उसके विंग्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? पंख। So you have to learn this poem and read this poem again and again. आपको ये नज़म याद करनी है, ये भी पेपर में आएगी फाइनल टर्म एग्जामिनेशन में। सो इसके मार्क्स दिए जाएंगे, ओरल में आएगी, और इसको रीड करना है आपको बार बार और इसको याद करना है। एक बार फिर से मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ। जब भी आती लाल परी, खुशियाँ लाती लाल परी, रंग बिरंगे सपने देकर दिल बहलाती लाल परी, सुबह सवेरे प्यार से आकर मुझे उठाती लाल परी, लड्डू पेड़े बालूशाही खूब खिलाती लाल परी, जब भूलूं मैं अपना सबक याद कराती लाल परी, पंख पे अपने मुझे बिठाकर सैर कराती लाल परी। Okay, now close this book. Take out your syllabus. Page number 4. Open page number 4 in your syllabus. Month of November. Conversation. Question number 1. Question number 1. What are healthy foods? Now tell me students, what are healthy foods? Healthy foods कौन से होते हैं? Healthy foods वो होते हैं जो हमारी बॉडी को फ़ायदा दें, जो हमारी बॉडी पे जाके वो हमारी बोन्स को, हमारे ब्लड में इस तरह करके फ़ायदा दें। What are healthy foods? Like apple, like fruits, different kinds of fruits, apple, banana, and sandwich. This is our healthy food. Basically जो होममेड फूड होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। What are junk foods? अब ये जंक फूड्स क्या होते हैं? जो कि हेल्दी नहीं होते, जो बाहर का खाना होता है वो
होते हैं हमारे जंक फूड्स. सो व्हाट आर जंक फूड्स? Like burger, french fries, pizza, these are junk foods. These are not healthy for our health. What is the benefit to drink milk? Milk, दूध पीने के क्या फ़ायदे हैं हमारी बॉडी में? Milk, when we drink milk, milk makes our bones strong. Milk makes our bones strong. दूध हमारी हड्डियों को कैल्शियम देता है और हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है. Now, month of December. What do we get from meat? हमें गोश्त से, मीट मीन्स गोश्त, हमें गोश्त से क्या मिलता है? हम जब गोश्त खाते हैं, मीट ईट करते हैं, तो हमारी बॉडी में क्या जाता है? यस, protein. What do we get from meat? Protein. Name some flowers. Name some flowers. Okay, do you know names of some flowers? Let's read it. Sunflower, rose, lily, tulip, and jasmine. Read it again. Sunflower, rose, lily, tulip, jasmine. Again. Sunflower, rose, lily, tulip, jasmine. What do we get from vegetables? Yes, vitamins and fibers. Vitamin and proteins. What is the biggest planet is our solar system? ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर रखूँगी, ये आप लोग के लिए होमवर्क है, आप लोग मुझे बताएंगे ग्रुप में. What is the biggest planet is our solar system? हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? ये आप लोग मुझे ग्रुप में बताएंगे. ओके. Number 5. Name some food from which we get protein. Meat, vegetables, fish. Now, come to month of January. When do we get summer vacation? June and July. When do we get summer vacation? June and July. When do you get winter vacation? In December. When do you get winter vacation? In December. What is your religion? आपका दीन क्या है? Islam. What is your religion? Islam. Who is the last prophet of Allah? हमारे सबसे आखिरी नबी कौन है अल्लाह ताला के? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. The last prophet of Allah, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. Who is the last prophet of Allah? Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. What is the name of the holy book of Muslims? मुसलमानों की किताब कौन सी है? होली बुक कौन सी है? कुरान मजीद. What is the name of the holy book of Muslims? Quran Majid. What is the religion? Islam. Who is the last prophet of Allah? Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. What is the name of the holy book of Muslims? Quran. Quran Majid. Let's read it again. What are the healthy foods? What are the healthy foods? Those foods who made in home. What are junk foods? Like burger, pizza, french fries. What is the benefit to drink milk? Milk makes our body strong. Now, month of December. What do we get from meat? Protein and vitamin. Name some flower. Sunflower, rose, lily, tulip, jasmine. What do we get from vegetables? Vitamin and protein. What is the biggest planet is our solar system? This is your homework. So give me the answer in group.
Name some foods from which we get protein. Meat, milk and egg. When do you get summer vacation? In June and July. When do you get winter vacation? In December. What is your religion? Islam. Who is the last prophet of Allah? Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. What is the name of the holy book of Muslim? Quran Majid. Now our conversation is completed. Let's read it again our Urdu poem. लाल परी. जब भी आती लाल परी, खुशियाँ लाती लाल परी, रंग बरंग के सपने देकर दिल बहलाती लाल परी, सुबह सवेरे प्यार से आकर मुझे उठाती लाल परी, लड्डू पेड़े बालूशाही खूब खिलाती लाल परी, जब भूलूं मैं अपना सबक याद कराती लाल परी, पंख पे अपने मुझे बिठाकर सैर कराती लाल परी. अगेन. जब भी आती लाल परी, खुशियाँ लाती लाल परी, रंग बरंगे सपने देकर दिल बहलाती लाल परी, सुबह सवेरे प्यार से आकर मुझे उठाती लाल परी, लड्डू पेड़े बालूशाही खूब खिलाती लाल परी, जब भूलूं मैं अपना सबक याद कराती लाल परी, पंख पे अपने मुझे बिठाकर सैर कराती लाल परी. Now take out your English book, page number 64, tidying up. The girls are busy and so are the boys. They are putting away their books and their toys. The room is now tidy and quite a fine sight. Will it stay that way all day and all night? The answer is no. I just know I can tell, 'cause I too once was a wee one as well. Again, the girls are busy and so are the boys. They are putting away their books and their toys. The room is now tidy and quite a fine sight. Will it stay that way all day and all night? The answer is no. I just know I can tell, 'cause I too once was a wee one as well. Again, the girls are busy and so are the boys. They are putting away their books and their toys. The room is now tidy and quite a fine sight. Will it stay that way all day and all night? The answer is no. I just know I can tell, 'cause I too once was a wee one as well. Okay, you have to learn this poem again and again. You have to read this poem again and again and learn it. This is included in your final term examination. We discuss about lockdown and coronavirus. You have to wash your hands at least 20 seconds. Okay, and do anything. Before do anything, you have to use sanitizer and you have to wear mask. You have to wear mask daily. When you go outside, you have to wear mask, gloves, and then when you come inside the home, first you wear out the mask and gloves and throw in the dustbin and wash your hands at least 20 seconds and use sanitizer and then shake it your family members. Be careful. You have to careful in this pandemic situation and pray for our country, for our world कि अल्लाह ताला जल्दी से इस वबा को ख़त्म करें और हमारे स्कूलों को वापस से खोल दें. Inshallah, we will meet you soon in our next video.
Stay home, stay safe. Allah Hafiz.